उनको मौका दिया जाए। लंबे कद के हैं डॉकरल और थोड़ा फील्ड में बदलाव होता हुआ जैसे देखा मोहम्मद शहजाद अब स्ट्राइक पे आए हैं, क्योंकि उनको रोकना पहले 6 ओवर में किसी भी टीम के लिए बहुत कठिन एक कार्य है। जैसे उनके पास स्ट्रोक्स हैं, जैसे रेंज है मोहम्मद शहजाद के पास, और उससे बड़ी चीज है मनोज, जो उनका माइंडसेट रहता है, जो उनकी सोच रहती है, हमेशा आक्रामक शैली में खेलना पसंद करते हैं वो। और फाइन खेला, शायद बल्ला लगा है, इंतजार करना होगा एम्पायर के निर्णय का। थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए जी नहीं जी, यहाँ पे लेग बाई का इशारा, शायद पैड से लग के गई थी, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए अपनी लाइन में डॉकरल। और ये गलती आप कर नहीं सकते हैं, अगर आपके पास ऑफसाइड फील्ड है तो जो लाइन ऑफ अटैक है वो ऑस्टम के बाहर ही रहना चाहिए। पिछली 4 गेंदें देखे तो वो लेग स्टंप पर ही पिच कराई थी, और ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर थी। रन आते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए। एक बार फिर से देखिए, लेग स्टंप के बाहर से गेंद को कोशिश करें स्पिन कराने की, हालांकि विकेट में भी ऐसा कोई स्पिन दिखाई दे, गेंद नया है, टर्न होना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर। जो दुविधा रहती है एक स्पिनर के लिए, एक तो नई गेंद है, ऊपर से मोहम्मद शहजाद जैसा बल्लेबाज है, ये खेमा डग आउट अफगानिस्तान का तरक है या बहुत बढ़िया लय में है। एक बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में। 2 ओवर की समाप्ति 21 बिना किसी नुकसान के अफगानिस्तान। هیواد د لوړو زده کړو مؤسسه چې د لوړو زده کړو وزارت سره ثبت او راجستر ده، د تجربه لرونکي علمي کادرونو او 3 دورې فارغانو په درلودلو سره د حقوق، سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او د اقتصاد په ښوونځیو کې محصلان لري. اسانتیاوې او امتیازات، وړیا ترانسپورت، ځانګړی تخفیف، د لیلیې امکانات، مناسب علمي دایمي تعمیر، پراخه پارکینګ، کتابتون او کمپیوټر لاب. پته قصبه د موټرو پلورنځیو سړک، کابل، افغانستان. هیواد اصلي او معیاري زده کړې. दैनिक जाए अब्धानी, मोहम्मद नाबी, जदरान, राशिद खान। गेंदबाजी में परिवर्तन, केविन ब्रायन को लेके आए अब कप्तान। रन पर आकर शायद कुछ परेशानी महसूस हुई केविन ओब्रायन। नया ओवर लेकर टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। गेंद कुछ देर हवा में थी, फॉलो थ्रू में मौका हो सकता था यहाँ पर केविन ओब्रायन के लिए, लेकिन लगता है वो इस बात के तैयार नहीं थे। तीसरा T20 मुकाबला यहाँ पर देखिए, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ा सा टोटो के अंदर की तरफ आया। बेहतरीन शुरुआत है यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए, और मोहम्मद शहजाद जिस लय में नजर आ रहे हैं, बढ़िया संकेत उनके। शराफत शाकिर जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, पहले तो हमारे जुड़ने के लिए भारत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, धन्यवाद। अफगानिस्तान ने पहली बारी शुरू किया है, अब तक बहुत ही खूबसूरत 2 बैट्समैन हैं। इस्लामी बल्लेबाज जो है शहजाद मोहम्मदी स्ट्राइक पर खड़े हैं। पहले मैच में भी आयरलैंड को शिकस्त दी और दूसरे मैच में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये सीरीज तो जीत लिए, लेकिन तीसरे मैच में उसका मोराल जो है वो बहुत ऊंचा है और वो इस मैच में कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं।
और यहाँ पे सीधा हाथ में, तो पहली सफलता मिलती हुई आयरलैंड की टीम को। केविन ओब्रायन जो इससे पहले टी20 मुकाबले में थोड़े महंगे साबित हुए। مؤسسه تحصیلات عالی اسپینقر مؤسسه تحصیلات عالی اسپینقر شعبه کابل برای سمسترهای جدید بهاری 1396 خویش در پانزه‌های طب معالجوی، استوماتولوژی، تکنولوژی طبی و انجینری فارغان صنوف 12 و فارغان صنوف 14 انستیتوت‌های علوم صحی و تکنیکی ذکور و اناث را در تایم‌های قبل از ظهر و بعد از ظهر با داشتن استادان مجرب، شفاخانه تدریسی و امکانات درسی مجهز محصل می‌پذیرد. ثبت نام همه روزه جریان دارد. امتحان کنکور به تاریخ 10 حمل 1396 در مقر مؤسسه تحصیلات عالی اسپینقر شعبه کابل عقد می‌گردد. آدرس کارته نو سرک 960 متر رحمان مینا کابل. اسپینقر نماد تحصیلات عالی استاندارد و معیاری. नए बल्लेबाज आए हैं स्पाइन गनी। पहला विकेट यहां पर गया। 12 मैच खेले हैं, 261 रन, 2 दशतक और 69 सर्वश्रेष्ठ उनका स्कोर। पिछले मुकाबले में देखा था शहजाद जल्दी आउट हो गए थे। शहजाद का वहां रहना शराफुद्दीन एक बहुत बड़ी बात रहती है अफगानिस्तान टीम के लिए, क्योंकि जैसे वो विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, एक अच्छी रेंज उनके पास है शॉट्स की, उनको रोकना बहुत कठिन रहता है, खासकर पहले 6 ओवर में। शहजाद की जो बैटिंग स्टाइल है और उनमें हेलीकॉप्टर शॉट जो मारते हैं, वो उसका एमएस इंडियन एमएस जो है वैसे अफगान एमएस है और वो इंडियन एमएस है, दोनों में हेलीकॉप्टर शॉट में बहुत महारत रखते हैं। और आज भी देखने को अगर मिल गया 1-2 शॉट तो बहुत ही मजा आएगा। यह वर्ल्ड टी20 में हमने देखा था, कुछ गजब की पारियां खेली थी उन्होंने। कलाइयों का अच्छा प्रयोग करते हुए वापस आएंगे दूसरे रन के लिए। यहाँ पर रिस्ट वर्क देखने को मिलता हुआ और कहना होगा एक अच्छा ओवर आयरलैंड के दृष्टिकोण से, जिसमें एक सफलता भी मिली और काफी हद तक रनों पे भी अंकुश लगा। शुरुआत अफगानिस्तान के लिए 3 ओवर के बाद 26 रन, 1 विकेट नुकसान पे रखाई। जो एकमात्र विकेट गिरी अफगानिस्तान के लिए अभी तक शहजाद फिलहाल स्ट्राइक पे। डॉकरल एक बार फिर और अच्छी शॉट, खिलाड़ी टीम में तैनात दीप स्क्वायर लेग पे। यह प्रयास केवल 1 ही रन मिलेगा। विकेट मनोज बहुत बढ़िया नजर आ रही है, बैटिंग के अनुकूल है। जी हाँ, ठीक कहा आपने। बल्लेबाज को किसी तरह की अभी तक जो चौथा ओवर प्रगति पर है, लेकिन किसी तरह की कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई है। जो विकेट जरूर खोया अफगानिस्तान ने, लेकिन वो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हुए। शराफुद्दीन, थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, आयरलैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी की। मतलब क्योंकि विकेट बढ़िया है, पहले रन आप बोर्ड पे बना लें तो बेहतर नहीं रहता कहीं ना कहीं। बात अगर अफगानिस्तान के बैटिंग की जाए तो अफगानिस्तान के बैटिंग पिछले 2 मैचेस में जो है जबरदस्त बैटिंग की। तो आज आयरलैंड ने जो फैसला किया है, तो पिच की कंडीशन को देखते हुए उसने ये फैसला लिया है। आप देखते हैं कि वो कितने कामयाब होते हैं इस फैसले में। और शहजाद मोहम्मदी ने जो एक दिन में 2 अर्धशतक बनाए थे और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो एक दिन में टी20 2 मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल में डिजर्ट टी20 चैलेंज कप जो दुबई में हो रहा था, वहां पे 2 अर्धशतक एक दिन में बनाया, तो विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। बहुत बढ़िया खिलाड़ियों का प्रयोग करते हुए गैप में खेला। अच्छा तालमेल दोनों बैट्समैन के बीच में। और वो डेजर्ट कप की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान टीम की।
चैंपियन भी है। वो उस डिजर्ट कप का जो फाइनल है वो अफगानिस्तान ने जीत लिया। सेमीफाइनल में ओमान को शिकस्त दिया और फाइनल में आयरलैंड को। और ये भी जबरदस्त शॉट और गेंद बाउंड्री। बैटिंग देख के देखी जाए तो रूम बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से शॉट मारते हैं और गेंद भी नहीं करते। वो बॉल को देखते हैं, गेंद को देखते हैं और रूम बना के खूबसूरत शॉट मारने में बहुत महारत रखते हैं। फुटवर्क बहुत बढ़िया है। अगर आप देखें, बेशक थोड़े भारी भरकम है, पर अगर आप फुटवर्क देखें, बहुत चप्पल उनका नजर आता है। बहुत जल्दी बैकफुट पे अपना वेट ट्रांसफर करते हैं। तेज गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज थे। ये देखिए, ये मैं बात कर आउट। एक और दिलकश स्ट्रोक शहजाद मोहम्मदी के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन है, बहुत ही जल्दी से अपने को पोजीशन किया देखिए। और उसके बाद जो मिड विकेट का एरिया जहां पर गैप अच्छा खासा है, उसमें से गेंद को निकाला और सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहले गेंद की लंबाई को भांप लिया था। बहुत बढ़िया पोजीशन में आते हैं। बैट फ्लो देखिए, इस बार बैट्समैन को फॉलो किया केविन रॉय ने, या रूम ने दिया था। अच्छा प्रयास फील्डर का, बहुत तेज गति से आए मिड ऑन क्षेत्र से। फील्डिंग का स्तर हालांकि तारीफ करनी होगी आयरलैंड की, जिस प्रकार की फील्डिंग रही है पहले 2 T20 मुकाबलों में। आयरलैंड के जो फील्डर्स हैं, वो बॉलर जो है वो बिल्कुल फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं, तो फील्डर को भी दिक्कत नहीं होती है गेंद रोकने के लिए, क्योंकि गेंदबाज जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बॉलिंग कर रहे हैं। प्रयास किया था, ऐसा लगा ग्लव भी लगा है, कैच लपक नहीं पाए, कोई इशारा नहीं एम्पायर द्वारा, तो कहने कहीं बल्ला लगा था वहां पे। कठिन था, बहुत कठिन था। इतना आसान ये कैचेस होते नहीं है। गेंद डिप कर रही थी। गैरी विल्सन विकेट कीपर आयरलैंड टीम के। एक और खूबसूरत शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट शहजाद मोहम्मदी ने। और इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए अफगानिस्तान के 5 ओवर के बाद 51 یو ځلو خو منځلو مویه هم راکه هر یو چې مې کور ته وړې هیڅ ځلو خو غوړوالی نه پاکوي دا هم د وهاب د لوښو مینځلو مایع هم غوړوالی پاکوي او هم لوښي روښانوي. کاکا بابا ما نو ویلي چې د وهاب ټول توکي د اعتماد وړ دي. هولورې ओवर की अंतिम गेंद थी, स्ट्रोक के लिए 6 गए बनाए और बेहतरीन एक और 6 रन यहां पर। और मात्र 30 गेंदों में अफगानिस्तान ने अपने 50 रन पूरे किए। 51 एक विकेट के नुकसान पे। सामने वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन और इधर कमेंटेटर बॉक्स में भी परिवर्तन। आगे का विवरण देने के लिए अंजुम चोपड़ा और रमन भनोट। Afghanistan after being asked to bat first and put the runs on the board. Brave decision from the Ireland captain. The reason I say brave is for the fact that in the previous T20 they found the going tough while chasing the score set by Afghanistan. Of course, it was in excess of 160, 165, but these are different conditions, warmer day, and especially highly unlikely that there's going to be a rain. But it's raining boundaries at the moment of Shahzad's plate, that's for sure. 38 for him of just 21 balls. McCarthy coming in for some stick here. Last over of the power play, remember? And a couple of men dropping back at the fence. There's long on and deep mid wicket back at the fence. Again,
The line is clearly outside off stump, and the intent is to try and slot on the onside. Again, the result is pretty much the same. Runs flowing off Shahzad's bat. 11 off the over already. That's another easy single as he just slammed the bat onto his foot. That's what it seems. 6 overs gone. It's 63 for 1. مؤسسه تحصیلات عالی هواد که ثبت و راجستر شده وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد، با کادر مجرب علمی و داشتن سابقه استعداد فراغت موفقانه در رشته‌های اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، فناوری اطلاعات یا آیتی، با امتیازات ترانسپورت رایگان، امکانات لیلیه و تخفیف ویژه به مناسبت افتتاح مکان جدید و دائمی تحصیلی و پارکینگ وسیع برای سال 1396 محصل می‌پذیرد. آدرس کابل قصبه سرک موتر فروشی، هواد، تحصیلات معیاری عصری. 17 runs. And today, of course, Afghanistan have been put into bat by William Porterfield. 49 is what Shahzad's batting on. His highest score in this series, Anjum. Probably just pulled the left calf muscle. Already he was heavily strapped when he came out to bat itself. This is the attacking batting that one got to see in the first over itself when Shahzad came on. Beautiful 3 cracking boundaries on the offside. Dockrell came in from the other end, and he was tasting the same feeling that McCarthy was given, the same treatment till Kevin O'Brien came in, and he was also attacked the same manner as Dockrell was. This was in the last over, making room, the first boundary outside the off stump, and then this huge 6 that sailed over the long off region. His previous best this series was a 47 that he got of 41 balls, did Mohammad Shahzad. And this innings, he's gone on just on the verge of a 50 now, of 26 balls, 5 4s, 4 6s. He looked like a man of the mission when he walked out to bat. You could see the intent clearly writ large on his face when he crossed us while you were doing our pre-show. Yeah, and he knew that when he gets in, he's going to be attacking. There are some batters who try to tap the bat onto the ground, and you get an idea or you get a sniff as to in what kind of a mode are they in. It's just a sense that you pick up. It's no indication really. But when Shahzad was walking out, you could clearly sense that, today is going to be my day. I'm going to make sure to get the ball in my radar. It's going to go sailing over the fence. And if I don't get it, I'll make sure I'll make that room. Yes, he is on the verge of a half century here. Stuart Thompson coming on now. And that's not the most auspicious start for Thompson. A wide, well outside off stump. 6 extras in the innings so far. The important part is the power play has come to an end. And now he can have more protection on the boundary rope with Shahzad on strike. And length's always going to be the key. What's surprising is that as a new ball, and that's 50 for Shahzad. 50 of just 27 deliveries. Incredible batting. Power-packed batting from the moment he walked in. It's 5 boundaries, 4 6s for Mohammad Shahzad. His first 50 of this series. He does get Afghanistan off to a flyer when he gets going. Once again, just 27 deliveries. That strike rate is mammoth. Over 185. He's delighted the spectators. Thompson struggling here. They'll get a couple of runs thanks to that wide down the leg side, and the batsman crossing over for a run as well. Eight extras already. It's a good start. 6 overs, 67 for 1 is definitely a good start for Afghanistan.
sprayed the ball on both sides of the wicket. More runs here. He doesn't bother. How does it look when he hits that ball? It just needs to go over the infield. That's a clear indication and the intention of Shahzad. Just seems to be struggling with that pulled left calf muscle. He's not very intent on running. Now he just wants to crack the ball over the boundary rope. Change of pace. Strolled his fingers over the seam there. That's very, very lucky for Thompson not to be called a wide. Inquiry on how many deliveries are still left. Thompson is very fortunate. It was extremely close. Yes, was close. Could have been called a wide. Very close to the wide marker, that's for sure. Better ball. So, he's not conceded a boundary yet. As Thompson, a couple of wides all right. He sprayed the ball on both sides of the wicket, but he hasn't been hit for a 4, and that's a welcome change for Ireland. Good commitment by the Irish fielders today. That's another plus that we've seen. It's good fielding from Paul Sterling. Sterling, remember, Anjum got a quick-fire 34 that set Ireland off in that run chase a couple of days ago. And just when his wicket fell, things turned around. And Afghanistan were able to get back into the match. Yeah, the batting hasn't really done enough for the Irish team. And that's why they need to restrict the Afghanistan team here. Runs here. Ghani will come back for 2. By the time Dockerell's throw comes in from the deep, it was a good effort from Tucker to stop it, and then Dockerell ran across. So 7 overs gone, it's 72 for 1. Ghani again just flicking it off his pads. There's good commitment from Tucker running across from the fine leg region. And then the team effort came into play with Dockerell picking the ball up and firing that throwback. Mohammad Shahzad, 53 not out. Barakai, the man who demolished the Irish bowling in the previous match, out for 3 today. McCarthy was expensive. The first over came back again, was taken for runs. The first one was 40. تشكر خريدة درست هنا پولتا هنا ميديتا باشه 5 افغانی است بتام چیز نمیشه میشه آقا با 5 افغانی 50 ام بی اینترنت میشه چی 50 ام بی اینترنت بله حالا شما می توانید 50 ام بی اینترنت را در بدل 5 افغانی در روز فعال کنید. برای فعال نبودن همین اکنون 50 ام بی را با 3378 پیام کنید. با اتصالات آینده از شماست. Given Afghanistan's spin armory, it was better to face them first up while the wicket was still strong and true. But now leg spin being introduced from the far end. It's going to be Jacob Mulder, the young leg spinner. 8 matches, 10 wickets to his name. Hasn't done much in this series though. Straight away he's quicker through the air, trying to keep the ball flat and quick. Doesn't want to really tempt Shahzad too much. Against the turn, he's just worked it down the ground. Shahzad, that'll get him off strike. And that's also, we've seen the 50 of the partnership come up as well. 28 balls is all that it's taken for these two to put on 50 runs, Ghani and Shahzad. 8 is the contribution and 7 deliveries for Ghani. So he knows who's done the scoring.
Yes, he's just scored 8. Shahzad scored 39 of those 50 runs and 3 to the extras. Now the fielders are at the edge of the 30-yard circle, and that's what's making these singles so easy to come by. And I'm also impressed by the start of Mulder. The previous 2 games he was struggling to get his first over going. Down the ground. This should be 4. No chance. Excellent shot. Pitched up delivery. Wasn't turning much. Beautiful shot. Yes, and now Usman Ghani gets into double digits. Remember, this is the first match that Usman's playing in this series, and he'll be heading back after this game. Not a part of the one-day scheme of things. That was a cracking shot down the ground. And as Lalchand Rajput was saying, the fact that they wanted to get a quick look at him today, and that's the reason why Shafiqullah Shafaq was kept out of the playing 11, and Usman got a game in. 8 overs gone. It's 79 for 1 Afghanistan. مؤسسه تحصیلات عالی اسپینقر مؤسسه تحصیلات عالی اسپینقر شعبه کابل برای سمسترهای جدید بهاری 1396 خویش در پانزه‌های طب معالجوی، استوماتولوژی، تکنولوژی طبی و انجینری فارغان صنوف 12 و فارغان صنوف 14 انستیتوت‌های علوم صحی و تکنیکی ذکور و اناث را در تایم‌های قبل از ظهر و بعد از ظهر با داشتن استادان مجرب، شفاخانه تدریسی و امکانات درسی مجهز محصل می‌پذیرد. ثبت نام همه روزه جریان دارد. امتحان کنکور به تاریخ 10 حمل 1396 در مقر مؤسسه تحصیلات عالی اسپینقر شعبه کابل عقد می‌گردد. آدرس: کارته نو سرک 960 متر، رحمان مینا، کابل. اسپینقر نماد تحصیلات عالی استاندارد و معیاری. Straight to McCarthy. I like the way Shahzad packs that punch. He gives it everything. Entire energy into that shot. Doesn't really bother whether the body width is going or not. His hands are extremely powerful through that line of the ball. Just remember, the body weight was backing away. The motion was to move back. They're appealing here. It seemed to have deflected, having taken the pad probably through to the wicket keeper. And that's what Thompson was all excited about. Or maybe just making sure that the umpire has watched it enough and shouldn't be declared a wide. It's been guilty of spraying on both sides of the wicket. Yeah, there was a little flick of the pad. That was good enough to save him from being called wide. He's disappointed there. He's disappointed. He's missed out on a scoring opportunity as Usman Ghani found Jacob Mulder at short third man. He's tried to play it late, and you can take a look at it on the replay as well when it comes up. The fact that he played it late, wanted to get it very fine. That's unfortunate. That's really unfortunate for Thompson. It's not a bad ball. It's definitely not intended to be going down the boundary at third man region. Ghani would be saying there's some justice in the world, because that's where he intended to play the last but one delivery. This time he was trying to go squarer off the wicket. Got that bottom edge and it's run away for 4. He doesn't have a third man, he has a fine leg. Patrolling the boundary behind the bat. He's got a deep extra cover. Largely should be bowling wicket to wicket here, Thompson. There is protection in the deep, but he won't be able to stop it. Cracking shot from Ghani. He's now taking a toll on Stuart Thompson. A couple of boundaries back to back. He did it straight to beat the long on fielder. And who was wide? He was very wide of the long on region.
Sample time for the ball to get to the fence. But yes, take nothing away, it was an incredible shot. He's batting really well, taking all his chances that has been given to him by the team management. More of the orthodox style of offering the full face of the bat. 9 gone, 89 for 1. بینی هم مایع ظرفی وهاب که چربی‌ها را پاک میکنه و ظرف‌ها را درخشان میسازن. کاکا بابا من بعد نگفته بودم که اجناس وهاب مورد اعتماد همه ماست. They're in the slot to be driven through the covers. William Porterfield really let it rip. A couple of economical overs in the power play for Ireland, but then ever since these two have played themselves in post the power play, you can see those red skyscrapers. That's the 3 overs post the power play. Mulder continuing. His first over went for 7, remember, the leg spinner. That was close. He was playing for the big turner, Usman Ghani, and he's lucky he just got his bat down in time. Yeah, dangerous shot, especially to a ball which is being bowled on the stumps. Come on, boys. 2 here, 2, 3 here. You have to be very, very sure that you make contact with the ball. Shahzad's having no such problems. It's a very good effort in the outfield. Kevin O'Brien putting in that dive. I'm sure they'd want the third umpire to take a look at it to see if his body had touched the boundary rope when Kevin O'Brien dived to save the ball. Again, muscled through the offside. Enough room for Shahzad to play in that gap. I think it's just the time that his body was touching the rope, Kevin O'Brien. He made sure that he flicks the ball back. That was a good enough indication. Or rather, it should be good enough for the third umpire to declare it as a boundary. Take another look at it from the other angle. It was a good effort from Kevin O'Brien. He had a lot of distance to cover. A good 18 yards to his right. It was a good clean dive. But the ball was probably just touching his body when he flicked it back. There, I thought the other angle, the front angle, was a much better angle to give you a clear perspective of what happened. And this should be more definitive. At least the body language of Kevin O'Brien does indicate that his body was touching the rope by the time he flicked the ball. It may not be as well, but it's always like a feeler that a player always knows that he touched the boundary ropes or not. Well, it's a tough one for the third umpire to call. Nandan will have to adjudicate on this. Just get a feeling here, the hand was touching the ball. The right hand seemed to be touching the ball when the left hand touched the boundary rope. And yes, I think it's been given as 4, has it? Yes, it has. Just picked the man in the deep. Shahzad was a rank long hopper. A juicy half volley that he could have put away anywhere. .95. Where would they be wanting to finish here?
10 gone, 95 for 1. لقمانی درملتون د پټو مرزونو درملنه د پاکستان سیلکوټ 42 کاله تجربه لرونکي ډاکټر حکیم رانا عارف کل کوهاټ پړچنار بنو کې ما 15 کاله تجربه ده د ځنګلي بوټو له ریښو څخه جوړ شویو درملو په مرسته درملنه د بندونو او ملا درد لپاره ځانګړي تیل د شکر ناروغۍ درملنه د تریخي ناروغیو درملنه د زیړی ناروغیو درملنه د مخ ښکلا درملنه د بواسیر ناروغۍ درملنه د ښځینه ناروغیو درملنه د نارینه کمزورتیا درملنه د ښځینهو لپاره د ښځینه ډاکټري اسانتیا د بېوزلو ناروغانو وړیا درملنه په عربي اماراتو کې تر کور او کارځایونو د درملو رسونه لقمانی درملتون د پټو مرزونو درملنه پاتا نایب سړک له الفاتیم جمعه سره نږدې ډیرا دوبۍ اړیکې شمیرې 050 وشپېته 013 0 لس. Remember the first game, it was Shinwari, the man of the match, who made 56. The second T20, it was Najibullah Tarakai, who made 90. And now it's Mohammad Shahzad, who's the man on strike. Even side off stump, Shahzad is always looking to play the pull or the swipe down the ground towards wideish mid-wicket. So he wants to keep it further away from the off stump. He's made him bowl that line. Yeah, much better delivery from Kevin O'Brien. It was a fuller length ball swinging in, and that's the reason it was difficult to get under the ball for Shahzad. Experience of Kevin O'Brien will come in very handy. Got to feel very aware that he's got to use his experienced bowler in shorter spells. He's already bowled out 2. This is going to be his 3rd over that O'Brien is bowling. Oh, he's cleaned up the furniture there. Kevin O'Brien gets his 2nd wicket of the match. And it's Usman Ghani who'll have to go. A needless charge down the track. Missed the line completely. د اتصالات د ډیرو جوایزو پروګرام ته ښه راغله. دلته تاسو کولی شئ د زړه راښکونکو ډالیو او وړیا امتیازونو څخه خوند واخلئ. د ګډون لپاره همدا اوس ستوری 600 علامت نمبر او یا هم 600 ډایل کړئ او د اتصالات شمیرو ته 50 دقیقې او د وفادارۍ لس نمرې لاسته راوړئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. Getting cleaned up. 23 for Usman Ghani, 97 for 2. .74 was the partnership between Usman Ghani and Mohammad Shahzad. As we see the skipper, Asghar Stanikzai, promoting himself at number 4 in this game for Afghanistan. Afghanistan has seen some good results under Asghar Stanikzai's captaincy. 10 T20 matches unbeaten. That's the run that Afghanistan are having in the recent times. Remember, they remained unbeaten all the way through the T20 Desert Challenge in Dubai. 1-2 T20s here in this series as well. Oh, straight away. It's a no-ball call by the umpire. I wonder if Asghar Stanikzai had actually heard that call, because he was charging down the track. It seems he was knocking out there in the nets just before he was asked to come in and bat, as the umpire declares a free hit for the overstep that Kevin O'Brien took in the previous delivery. And guess what? It's going to be the man who's batting on 62 not out, Mohammad Shahzad, who's going to be facing that free hit delivery. Kevin O'Brien under the pump. Oh, that was hit hard. 100 up on the board for Afghanistan with that single. Oh, that's going to hurt. The left hand did take the entire blow of that shot. Yeah, people could argue that it was a catch,
on his way back. But, oh, I tell you, that's really going to hurt. It's going to be stinging right now. So after 10 or 15 seconds, a throbbing pain just comes through on your left hand. It's going to be real hard work if Kevin O'Brien can actually take the ball and go out there and complete his over. Oh, that was a cracker of a shot. And you could see the swelling developing just at the edge of the left wrist. Yeah, Paul McCarthy's just blocked that shot to have the better view. Harry McCarthy. But look at that shot. It was really traveling. Stanexai is going to be on strike, and Afghanistan have had a great run recently. Remember, they won the one-day series against Zimbabwe as well, with Asghar Stanexai as captain. Beat the Zimbabweans in that 5-match one-day series. Oh, he goes up. Biggie. This is maximum. Asghar Stanexai just wants to show who's boss. He's really carted that cleanly. If the right hand, the left hand was throbbing, the right hand is going to pain even more for Kevin O'Brien now. He made sure that the ball lands between the stumps. It was just a little wide, but the power of Stanexai making sure it just sails over and still dropped on the boundary. A good comeback ball. Good comeback ball from Kevin O'Brien, and equally well played by Asghar Stanexai. Oh, he looks a busy player here. It's not that they're batting the last 3 or 4 overs. He's come in at a time when there were 10 overs more to go for the Afghanistan team. He's come up and straight away got things moving big time. It's going to be Shahzad on strike for that final delivery. It's an expensive over from Kevin O'Brien. There is protection in the deep. Dockerel keeps them down to just a single. 11 overs gone. It's 108 for 2 Afghanistan. Couple of wickets that have fallen have been claimed by Kevin O'Brien. 3 by Najibullah Tarakai, 23 by Usman. لقمانی درملتون د پټو مرزونو درملنه د پاکستان سیلکوټ 240 کاله تجربه لرونکي ډاکټر حکیم رانا عارف کل کوهاټ پړکنار بنو کې ما 15 کاله تجربه ده د ځنګلي بوټو لري خو څخه جوړ شوی درملو په مرسته درملنه د بندونو او ملا درد لپاره ځانګړي تیل د شکر ناروغي درملنه د تریخي ناروغیو درملنه د زیړی ناروغیو درملنه د مخ کلا درملنه د بواسیر ناروغي درملنه د خزینه ناروغیو درملنه د نارینه کمزورتیا درملنه د خزینه لپاره د خزینه ډاکټري اسانتیا د بیوزلو ناروغانو وړیا درملنه عربي اماراتو کې تر کور او کارځایونو د درملو رسونه لقمانی درملتون د پټو مرزونو درملنه پاتا نایب سړک ل الفاتیم جمعه سره نږدې ډیرا دوبۍ اړیکې شمیرې 050 وشپېته 0 0 لس. His arm over and pick up wickets as well. Not like that. That's 6, is it? Reverse swept for 6. Would you believe it? He's picked it on the full as Shahzad. He's on song today. He seems a man in complete control of his batting. The first ball that McGrain bowls round the wicket, he's not shied enough from batting as a left-hander. Take a look at that power behind that shot. Ooh, that's a fantastic shot. Another single. His swashbuckling innings has taken him to 71. Mohammad Shahzad. Now it's Stanexai on strike, the captain.
It's turning out to be baptism by fire for Andrew McBride. More runs here off the splice of the bat, and it's going to be 4. I think the Irish bowlers have missed a trick here. They've tried to go around the stump with McBride to stifle the batters in terms of room, but it's actually become much more easy because the line that McBride is bowling, it's just outside off stump, which is helping the batters just throw their arms at the ball. 2 boundaries back to back for the Afghanistan team. There's a fielder in the deep. Taken. And finally, a wicket falls. It's Thompson at the boundary rope who's managed to clinch on to that catch. McBride gets a wicket. And Stanigzai is the man who'll have to go. It's Stuart Thompson who's picked up the wicket. The catch taken by Thompson, the wicket to McBride. Coming close. هیواد د لوړو زده کړو مؤسسه چې د لوړو زده کړو وزارت سره ثبت او راجستر ده د تجربه لرونکي علمي کادرونو او 3 دورې فارغانو په درلودلو سره د حقوق، سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او د اقتصاد په ښوونځیو کې مارسلان مني. اسانتیاوې او امتیازات، وړیا ترانسپورت، ځانګړی تخفیف، د لیلي امکانات، مناسب علمي دایمي تعمیر، پراخه پارکینګ، کتابتون او کمپیوټر لاب. پته قصبه د موټرو پلورنځیو سړک کابل افغانستان. هیواد عصري او معیاري زده کړې. Is the new man in 37 matches, 2 half centuries and a best of 60 unbeaten in his T20 career. That's how McBride managed to get the wicket in line with the stumps. A little fuller. Couldn't get the kind of elevation he was looking for, but a well-timed jump by Stuart Thompson. Still scoring at a very brisk clip. The run rate's over runs per over for Afghanistan in this innings. Look at the bottom hand play there. Just me. That ends over. 12 gone. It's 119 for 3. Continue at this rate. .200 is on the card. Afghanistan, 8 overs to go. The man who scored the maximum runs this innings, Mohammad Shahzad, is still there. 71 of 41 deliveries. That's the man who's talking Mohammad Shahzad. It's a touch different to what Rashid Khan bowls for the Afghanistan team. But both a great job for their side.
What will be interesting to see is how does the left-hander take to the leg spinner. Najibullah Zadran. It's fortunate that it didn't rattle the furniture behind him. Aerial ball, there is a fielder. Easy catch it is in the deep. And Mulder gets his man. Seems as if the leg spinner knew exactly what he was doing, and Mohammad Shahzad will have to go. He's out for 72. He's played an excellent knock today, Mohammad Shahzad. The 72 don't do justice to the kind of shots. د نن په هڅو خپل راتلونکی د لوړو زده کړو مؤسسه د ځوان علمي کدرونو د روزنې ډګر د تدریسي روغتونونو د هلکانو لپاره مجهزه لیلیه او د نجونو لپاره د وړیا ترانسپورت په درلودلو سره د ستوماتولوژي حقوق او سیاسي علومو په پوهنځیو کې محصلین مني نوملیکنه روانه ده. بایزید روخان ستاسو د روخانه راتلونکي لپاره. Remember, he was the man of the match in the first T20 for the 56th that he got. He is a big hitter of the cricket ball, quite like most of his teammates in this Afghanistan team. But a couple of wickets have gone down in quick succession for Afghanistan, and two new batsmen at the crease now. Played late by Najibullah. That's Najibullah Zadran, remember. Get a feeling here, Anjum, that he's not picking the ball out of the hand, therefore he's trying to read it off the pitch. Just another look at he had got out, but in succession there's been another appeal, and this time against Zadran, who's been declared caught behind. 4 down now, rather 5 down now for Afghanistan. There's a good delivery this from Jacob Mulder. د سپنغر سالنګ او ژوندون غوړي د وطن تولیدات تازه او خوندور. سپنغر سالنګ او ژوندون غوړي چې ستاسو د روغتیا ضامن دي، په کارولو سره یې د ګران هیواد د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه واخلئ. د وطن تولیدات، د وطن ویاړ. Spun and turned the other way, got the edge. Played just like a tail ender there, unsure of the turn, unsure of what the ball is doing. Gone for 1, 1 to 1 for 5. So a couple of wickets have gone down in quick succession here for Afghanistan. They need to regroup. We're in a position of strength, and suddenly looking just a little wary. It's Mohammad Nabi who walks out into the middle. There was a good catch behind the stumps by Gary Wilson. But now Mohammad Nabi is the new man in. Another player who was snapped up at the IPL auctions by Sunrisers Hyderabad. They picked up both the all-rounder Mohammad Nabi and the Afghan leg spinner Mohammad Rashid Khan. But Mohammad Nabi, best of 52, 739 runs in 55 matches, a very capable batsman. Who has a strike rate of 132 anymore. That means he's really made sure that the moment he walks in, he tonks the ball. 13 gone, 122 for 5. Two wickets for Mulder in his third over. He just gave away 3 runs in that over and picked up a couple of wickets. So suddenly Ireland find themselves back in the match, and straight away they're turning to the experienced left arm. और ये थी अंतिम गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, पूरा अपना
बॉटम हैंड का प्रयोग किया और क्योंकि हाथ लगा नहीं, उसके बाद गेंदबाज मकारते जाते हुए और जो स्टंप है उसको निकालते हुए और काफी दूर रह गए थे, तो कोई कठिनाई नहीं वहां पे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना कार्य बहुत बढ़िया निभाया मनोज मोहम्मद नाबी ने। ठीक कहा जी आपने, ना कि बढ़िया बल्कि बहुत बढ़िया निभाया और एक बड़ा स्कोर यहां पर बनाने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम। लाल बत्ती जलती हुई जो इस बात का संकेत की आउट यहां पर करार दिए गए। 89 रन मात्र 30 गेंदों में बनाए। बड़ा सवाल मनोज यही है कि क्या सही निर्णय था कि आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करें, क्योंकि ये जो प्रेशर अब चेस करने का बहुत कठिन है। आपको शुरू से ही जो पावर प्ले है उसका लाभ उठाना पड़ेगा। आयरलैंड के लिए मुसीबतें काफी बढ़ चुकी हैं इस मुकाबले में अब, और देखिए जो समर्थक है अफगानिस्तान टीम के काफी खुश, और क्यों नहीं। बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने अभी तक इस श्रृंखला में। 2-0 से आगे ये आखिरी मुकाबला है T20 का। 3 मैच की ये सीरीज है और आज जैसे बल्लेबाजी करी अफगानिस्तान ने, एक बड़ा स्कोर बनाया है टॉस हारने के बाद। और कप्तान भी ये कह रहे थे असगर स्टैनिक्ज़ाई कि अगर मैं टॉस जीता मैं पहले बैटिंग करता। 72 रन मोहम्मद शहजाद द्वारा, 89 रन मोहम्मद नाबी द्वारा। अंतिम गेंद पर रनआउट हुए मकारती जो गेंदबाज थे। 30 गेंदों में केवल 89 रन और 23 रन बनाए उस्मान गनी ने। स्टैनिक्ज़ाई जल्दी आउट हो गए। और गेंदबाजी की बात करें, केविन ओब्रायन 4 विकेट, 45 रन खर्चे अपने 4 ओवर में। 2 विकेट जेकब मल्डर के लिए, 4 ओवर 32 रन 2 विकेट। मैकब्रायन को 1 विकेट मिला, 1 ओवर 11 रन और 1 विकेट। ये तो सफल गेंदबाज, पर इकॉनमी देखिए सब 8 से ऊपर। एक अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए घानी और शहजाद के बीच। और उसके बाद मोहम्मद नाबी और शिनवारी 74 रनों की 35 गेंदों में। तो दिलचस्प रन चेज रहेगी आयरलैंड के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती। 234 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में। इतना आसान लक्ष्य नहीं है। जो आस्किंग रेट है वो 11 से ऊपर। और फिलहाल हम नीचे चलते हैं रमन भनोट के पास। Well, I've got Mohammad Nabi here with me. What a cracker of an innings from him in 89 in the end. Runner of the last ball, but really you took the Ireland bowlers and put them to sword today, Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, the wicket is very good for the batting. You know that Shehzad play very well. They give a good start. And in the middle, we lost quick wicket, 2-3 wickets by the coach, and the captain says to just play two or three hours, then you play your own game. Well, I tell you what, 89, your highest T20 score as well. 233 on the board for Afghanistan, their highest score in T20 internationals. Well, it's all come together perfectly. Yeah, you know, pitch like that, that's very good total on that pitch. And, you know, the way Shehzad play very well. And at the end, we achieve 6 hour very good. And, you know, the ball coming on the bat, that's why the target is 230. Well, a fantastic innings from you. And just quickly before you leave, I'm sure you'll have plans to bowl as well. The fact that, you know, you've been picked for the IPL by Sunrisers Hyderabad, as has Rashid Khan. How's that lifted the mood of the other Afghan cricketers back home? That was a good opportunity for me and Rashid. The morale of the all player in Afghanistan, the youngster, the morale was very good because they all were watching the IPLs, other leagues as well. They will be more motivated on that. Maybe the youngster is more coming on the top. Well, I'm sure after seeing you bat like the way you did today, a lot of youngsters back in Afghanistan are going to take to the game, Mohammed. And Nabi, thank you so much for speaking with us, and go well for the remainder of the game. Yeah, thank you. Well, that's Mohammed Nabi for you, ladies and gentlemen. What a cracker of an innings. 89, the top scorer in the innings. Let's very quickly now take a look and see how the wickets fell for Afghanistan. Remember, they were put into bat by the Ireland captain, William Porterfield, who was hoping
that they'd be able to make an impact when Afghanistan were put under the pump when they batted, but it wasn't the case. Let's take a look, though, and see how the wickets went down. That was the first wicket to go. Of course, the man who top scored in the last game, Najibullah, that's the way he fell. And then you had Usman Ghani being cleaned up as well. Cracker of an innings it was from Shahzad, but then that too came to an end in this fashion. The catch being taken in the deep, and Mulder claiming his wicket. Dockrell was the man who took the catch. And then Mulder picking up 2 wickets in that over. Big hitting attempted by the Afghan batsman in the middle order, and it just began to fall away at that stage. They were 5 down very quickly, and that's when the partnership came about. And the fact that Mohammad Nabi got a partnership going with Shinwari, the runs came thick and fast, and that is how Mohammad Nabi was run out of the last ball of the innings. But he'd done the damage. 233 on the board for Afghanistan. It's a huge number of runs on the score sheet. I'm joined by Anjum Chopra now. Anjum, you know, this is the highest score that Afghanistan have made in a T20 international. It's bettered what they've done against Zimbabwe, where they got 215. But this really was an amazing batting effort by 2 individuals. And the way that the batting was approached, early on it was Mohammad Shahzad's show. He went about in a manner where everything had to be hit out of the park, and he was timing the ball really, really well. There was just a little 7 or 8 delivery period, let's say just an over and a half, where the Irish team must have thought, okay, we've got 5 down of Afghanistan team. We can go out there and stop them somewhere around 180, 185. And then the onslaught of Mohammad Nabi came in. Incredible batting. I think the kind of shots that we got to see, it only goes to show the kind of hard work that Afghanistan cricket has done over the years, the kind of knowledge they've gathered by playing cricket all around the world. And look, they are doing really, really well, at least in the T20 format, what we've seen. Oh, yes, they are, and a cracking effort this. And I don't think William Porterfield would have really bargained for these many runs on the scoreboard, given the batting effort that Afghanistan have put in today. I thought they started really well, the Irish bowlers. They came out with a game plan. They knew exactly what are the things that they couldn't implement in the first 2 T20s. Coming out here, rotating the bowlers. There wasn't a time when Dockrell and Mulder, the both left arm and the leg spinner, were bowling in tandem. They were bowling separately. They had the quick bowlers coming in. Kevin O'Brien was given the 2 overs under the first 6 overs. So I thought Porterfield had his game plan worked out pretty well and implemented also. But when you have batters like Nabi hitting out of the park, Shahzad just making sure everything goes into the crowd, then it becomes difficult to control the things. Oh, it does. 72 from Mohammad Shahzad at the top of the order, really setting the pace for this, Afghanistan big, huge total. Now, one thing that you've got to remember is that Ireland against Afghanistan have managed to score big as well. But we'll take a look at that later. Let's first take a look at some 4s and 6s that were struck in this Afghan innings. We'll take a quick look. Shahzad was the man who started off initially, hitting big, carving the bowlers to all parts of the ground. And then, of course, the onslaught just continued from there on. Yeah, you see the lengths of the bowlers are bowling, and you will feel, oh, that's not their ideal length bowling. But I thought this was incredible batting. Just one delivery, at least in the first 6 or 7 overs that we got to see from the Irish bowlers. So it was just one odd delivery which they missed their lengths with, and Shahzad was very much in a punishing mode. From there on, especially in the last over of Mulder, where he just missed his line and length and got tonked around, even by the skipper Stanek Zayor earlier on from Ghani as well. I thought they were much improved bowling performance till the Nabi show happened. Oh yes, and then Nabi was on song, really clearing the outfield at will with that 89 that he's made. It's got Afghanistan their highest T20 international score. And Anjum, now the big question is, can Ireland get 234? Remember, they scored 225 before against Afghanistan, but that was a totally different ballgame altogether. It's going to be different and difficult as well. But let's see what happens as the 2 teams are out there already, and we're right in the center of action. शुक्रिया। ये बहुत दिलचस्प एक रन चेज रहने वाली आयरलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज वहां पे मौजूद विकेट के बीच में। शपूर सदरवान के हाथ में नई गेंद,
पवेलियन एंड की तरफ से आते हुए शाहपुर जदरान, पॉल स्टर्लिंग एक बहुत अनुभवी बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, सलामी बल्लेबाज आयरलैंड के, पिछले मैच में अच्छा कार्य कर रहे थे, एक लय में नजर आए थे, एक स्टार्ट मिल गया था पॉल स्टर्लिंग को। एक बड़ी चुनौती है आयरलैंड के लिए, 234 रन चाहिए उनको 20 ओवर में। कोई खिलाड़ी स्लिप पे नहीं, कोई गली नहीं, एक बहुत सुरक्षित फील्ड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे। जदरान के लिए पहली गेंद, अच्छी गेंद, अधिक उछाल मिलता हुआ। लेग बाय का इशारा एम्पायर का, तो खाता खोला आयरलैंड की टीम ने सिंगल के साथ, इस लेग बाय के साथ। स्वागत है कमेंटेटर बॉक्स में मनोज। धन्यवाद अजय। और लगभग 12 की औसत से यहाँ रन बने, 11.75 का औसत यहाँ पर है। आयरलैंड को इस मुकाबले को जीतना है तो असंभव तो नहीं, लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण काम। स्टुअर्ट थॉमसन उनके साथी हैं बाएं हाथ के, 20 मुकाबले 130 रन बनाए हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेट, जैसे देखा फील्डर थोड़े पीछे है, मिड विकेट के, ढीले हाथों से खेला और स्ट्राइक रोटेट करी। स्टुअर्ट थॉमसन की हम बात कर रहे थे, ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई अपने अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में, पर पॉल स्टर्लिंग ज्यादा अनुभवी और स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया, 130 का स्ट्राइक रेट है। 6 अर्धशतक लगाए हैं अपने टी20 करियर में। अच्छी शॉट, जैसे ही देखा गेंद लेग स्टंप पे है, अपने हाथ खोले यहां पे पॉल स्टर्लिंग ने। पहली बाउंड्री आती हुई यहां पर आयरलैंड की तरफ से। और स्टर्लिंग जो कि अच्छे अनुभवी बल्लेबाज आयरलैंड के। शाहपुर जदरान 30 मुकाबले 27 विकेट, पिछले मुकाबले में अच्छा कार्य किया था। इकॉनमी अगर आप देखें 7 से ऊपर। एक बार जो थर्ड एम्पायर है चेक करना चाहते हैं, जो पिछली शॉट लगाई थी पॉल स्टर्लिंग ने, क्या बाउंड्री थी या 6 रन थे। हालांकि एम्पायर ने, जो ऑनफील्ड एम्पायर है, उन्होंने 4 रन का संकेत दिया था। ये थी पिछली गेंद, अपने हाथ खोले थे, कोई खिलाड़ी टीम में तैनात नहीं, पर क्या गेंद अंदर गिरी थी सीमा रेखा के, ये चेक करना चाहते हैं थर्ड एम्पायर। जी हां, बिल्कुल 4 रन होने चाहिए, अंदर गिरी है तो 4 रन। तो वहां पे साफ प्रतीत होता हुआ 4 रन मिलेंगे पॉल स्टर्लिंग को, और वही इशारा किया था पहले ऑनफील्ड एम्पायर ने। और अजय ठीक भी है, जब एक सुविधा उपलब्ध है तो उसका लाभ यहां पर लेना चाहिए। एम्पायर को जरा सा डाउट था, उन्होंने क्लियर किया, तो शायद यही वजह थी खेल कुछ जगह के लिए रुका रहा। और इस बार ऑफ साइड पे जगह बनाई, इनसाइड आउट गए,
पॉल स्टर्लिंग। और मनोज ये तो करना ही होगा क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा लक्ष्य है, चुनौती इतनी बड़ी आयरलैंड के लिए है, तो जोखिम तो उठाना ही होगा, खासकर पावर प्ले में पहले 6 ओवर में। जी हाँ, 2, 3, 4 ये लक्ष्य है 234 का, और इसको पाने के लिए आपको अतिरिक्त जोखिम लेना ही होगा। और खासकर जैसा कि आपने कहा पावर प्ले में जदरान अपना एंगल बदलते हुए अब पॉल स्टर्लिंग के लिए। और बेहतरीन शॉट, दौड़ने की जरूरत नहीं, 6 रन मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रहार वहां पे, ये क्षमता है पॉल स्टर्लिंग में। पहले जो गेंद की लंबाई है उसको पिक कर लिया था, पोजीशन में आ गए थे, और बहुत ही उम्दा शॉट यहां पे पॉल स्टर्लिंग द्वारा। जी हाँ, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच और भरपूर ताकत उसके पीछे। एक अच्छा ओवर यहां पर पहला साबित होता हुआ। 14 रन अभी तक आ चुके हैं। और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा जो लेंथ है उसमें कटौती करी यहां पे। पहले ओवर की समाप्ति 15 बिना किसी नुकसान के आयरलैंड। आयरलैंड की काफी मजबूत बल्लेबाजी है, और काम मैंने जैसा कि पहले का चुनौतीपूर्ण काम है, असंभव नहीं है। और जिस अंदाज में शुरुआत की है यहाँ पर पहले ओवर 15 रन, 114 गेंदों में 219 रन यहाँ पर बनाने हैं। आयरलैंड को भी मुकाबले में अपनी पहचान बनानी है, जीत बनानी है, तो और टकाए हैं 28 मैच 27 विकेट। और ये अच्छी मूव है मनोज, क्योंकि तेज गेंदबाजों की जो आज इस सतह से ज्यादा उनको मदद नहीं मिल रही, वही देखने को मिला था पहले ओवर में, महंगे साबित हुए थे शाहपुर जदरान। और अब ये परीक्षा है आयरलैंड के बैट्समैन की कि स्पिनर्स को वो कैसे खेलते हैं। पिछले T20 में राशिद ने 5 विकेट लिए थे, एक उम्दा स्पेल डाला था, और केवल 2 ओवर में वो 5 विकेट। यहाँ पे होटल द्वारा बहुत बढ़िया शुरुआत, बिल्कुल सही टप्पे में गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे अब खेल रहे हैं बैट्समैन को फ्रंट फुट पे। लेकिन इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, और एक बार फिर से गेंद सीमा रखे के बाद 6 रन के लिए। क्रीज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं होटल। गेंद क्रीज के कोने से की थी, लेकिन बल्लेबाज उनसे कहीं ज्यादा चालाक। या फुटवर्क की दाद देनी होगी। आप जैसे देखा गेंद फ्लाइटेड है, कदमों का इस्तेमाल किया, चहलकदमी की, आगे आए और बहुत जल्दी पिक कर लिया। डॉन का फील्डर सर्कल के अंदर, पर फर्क नहीं पड़ता कि डीप में भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रन और मिलते हुए पॉल स्टर्लिंग को, 19 से पहुंचे केवल 8 गेंदों में। और इस बार
साइड आउट स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। तो रनों का सिलसिला यहां आयरलैंड की तरफ से भी जारी है। 10 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं, 4 गेंदें हुई है। कप्तान के साथ जरूर डिस्कस करते हुए देखिए, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और सर्कल को क्लियर करते हुए जानते हैं पीछे की तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। गलती की गुंजाइश मनोज बहुत कम नजर आ रही है यहाँ पे गेंदबाजों के लिए। आज विकेट बहुत बढ़िया है, बैटिंग अनुकूल है, ऑन द राइज खेल रहे हैं। फिर से अच्छी ड्राइव, इस बार सीधा फील्डर के हाथ में कवर क्षेत्र में। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक। इस बार सीधे बल्ले से 4 रन और मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, उच्च कोटि की शॉट कहना होगा। आगे आए, फिर अब सीधे बल्ले से खेला पॉल स्टर्लिंग ने। 14 रन उस ओवर से। क्या कलात्मक स्ट्रोक का जो आखिरी शॉट थी, आसान शॉट नहीं मनोज। जी हाँ, जो गैप है उसका भरपूर फायदा यहां पर उठाया और एक अच्छा ओवर और आता हुआ यहां पर आयरलैंड के लिए। दो 205 रन अभी भी चाहिए 108 गेंदों में आयरलैंड को मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छी शुरुआत हुई है। पॉल स्टर्लिंग खासकर जो भी 9 स्ट्राइकर एंड पे हैं, अच्छी लय में नजर आते हुए। बहुत दिलचस्प चीज है मनोज, पॉल स्टर्लिंग ने 11 गेंदों का सामना किया है और 27 में स्टुअर्ट थॉमसन ने केवल ये जो आखिरी गेंद थी उनकी दूसरी गेंद थी जिसको स्ट्राइक पे उन्हें लिया है। तो ज्यादा स्ट्राइक पॉल स्टर्लिंग के पास रही है। और ये थी पिछली गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, सही संपर्क नहीं, कोई रन नहीं वहां पे, डॉट डिलीवरी। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, इस बार फील्डर को भेजने में कामयाब नहीं हो पाए थॉमसन, लेकिन 1 रन लेने का मौका और उनकी कोशिश भी है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक स्टर्लिंग के पास रहे। हवा में भी थी लेकिन सर्कल में जो फील्डर है उनसे पहले ही टप्पा खा गई थी। पॉल स्टर्लिंग को देखिए, उनके आंकड़े देखिए, 27 पे नाबाद, 11 गेंदों का केवल सामना किया है, 4 डॉट डिलीवरीज, 3 बाउंड्री और 2 छक्के। बेहतरीन शुरुआत हुई है, पिछले T20 में भी अच्छी लय में नजर आए थे। और जैसे वो स्ट्राइक पे आए हैं, फील्ड में थोड़ी तब्दीली होती हुई। फाइन लेग अभी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे है और अब जो फाइन लेग का खिलाड़ी है उसको पीछे भेज रहे हैं, तो जो थर्ड मैन का खिलाड़ी है वो सर्कल के अंदर आता हुआ ऑफ साइड पे। तो ज्यादा प्रोटेक्शन है जदरान के लिए ऑन साइड पे। अब एक डीप स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग, और ऑफ साइड पे जाते हुए मौका था, गवा दिया। ये बड़ी विकेट होती पॉल स्टर्लिंग की। ये मौके अफगानिस्तान की टीम गवा नहीं सकती। जी हाँ, आगे निकले, स्ट्रोक खेला, शनवारी थे फील्डर वहां पर, इन्होंने कैच छोड़ा यहां पर। यार ऐसे लग रहा है कि मांसपेशी में खिंचाव हुआ है और जो फिजियो है वो अंदर आते हुए देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब मांसपेशी में खिंचाव हुआ है या क्रैम्प्स आ रहे हैं। और ये था जो कैच छोड़ा था शिनवारी ने।
मौका गवाया, गेंदबाज बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं। कैसे इनसाइड आउट गए, इसी तरह से जो एलिवेशन है वो प्राप्त नहीं कर पाए और मुझे लग रहा है शायद क्रैम्प्स आए हैं। स्टुअर्ट थॉमसन अब थोड़ी मुश्किल में। देखिए जैसे ही दौड़ने गए एकदम तेज से फुर्ती से, तो उसके बाद वापस आए, मुड़े, वहीं पे ऐसा लगा थोड़ा सा तो क्रैम्प्स आए हैं और थोड़ी मुश्किल में नजर आते हुए स्टुअर्ट थॉमसन। फिलहाल आयरलैंड के फिजियो अभी मैदान पे और उनको ट्रीटमेंट मिलती हुई। और अजय एक चीज आपने नोट की, जब स्टर्लिंग अपना दूसरा रन पूरा कर रहे थे तो उनका हाथ जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ था कि थॉमसन को कुछ इंजरी हो चुकी है, आप फिजियो तुरंत अंदर आइए। तो रन भी पूरा कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम से फिजियो को भी इशारा कर रहे थे। बहुत जरूरी है मनोज कि आजकल जो नए नियम है उसके अनुसार आप रनर का प्रयोग नहीं कर सकते और यही कारण है, या तो आप बल्लेबाजी करिए या फिर आप बाहर जाइए। तो ये निर्णय अब लेना है स्टुअर्ट थॉमसन को, खुद ही अपनी फिटनेस को असेस करना है, देखना है कि रन ले पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर आप चेज कर रहे हैं तो स्ट्राइक तो रोटेट करनी पड़ेगी, दौड़ना तो पड़ेगा, जो सिंगल है उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर आज एक अच्छा टर्न आउट यहाँ पे दिखा है, काफी तादाद में दर्शक आए हैं मुकाबला देखने के लिए। मुझे लगता है फिजियो ने अपना काम किया और अब बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार है। प्राथमिक उपचार लेते हुए यहाँ पर थॉमसन और उसके बाद अब दोबारा से पैडअप होते हुए छुट्टी का दिन, खिली हुई धूप और दर्शक पूरा मैच का आनंद लेते हुए 2020 में जो चौको छक्कों का जो रोमांच होता है वो अलग ही होता है और वो भरपूर देखने को मिलते हुए यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आप दृश्य नजर आता है, जितने भी ये तमाम स्पेक्टेटर्स आए हैं। अभी देखिए जब वो मुड़े थे एकदम तभी ऐसा लगा थोड़ा सा वहां पे कि अब क्रैम्प्स आए हैं और मुश्किल में थे। फिलहाल ये निर्णय लिया है स्टुअर्ट थॉमसन के कि अभी भी आप बल्लेबाजी करेंगे। तो कुछ विलंब के बाद एक बार फिर खेल आरंभ होता हुआ। राउंड द विकेट एक बार फिर आते हुए हैं और एक और मौका गवा दिया, एक और मौका गवा दिया। यहाँ पे शाफूर जदरान को यकीन नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, और उनकी गेंदबाजी पे ये दूसरा मौका गवाया है। और बल्लेबाज मनोज वही पॉल स्टर्लिंग। और इस बार कैच छोड़िए जन्नत ने, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी और किसी तरह की कोई परेशानी, बहुत आसान कैच यहां पर था, लेकिन गेंद जो है पाम में नहीं आई और एक तरह स्लिप करके चली गई और दूसरी सफलता यहां पर मिल सकती थी गेंदबाज को। लेकिन कई बार कहते हैं भाग्य साथ नहीं होता।
की हुई गेंद, खूबसूरत शॉट, बैकफुट पे गए स्टुअर्ट थॉमसन और मैक्सिमम 6 रन मिलते हुए का शॉट खेलते हैं। ये दर्शाता है कितनी द्वारा किस पोजीशन में आए स्टुअर्ट थॉमसन। फिर से 6 रन खाने के बाद अच्छी वापसी, यहां पर एक अच्छा ओवर। هیواد د لوړو زده کړو مؤسسه چې د لوړو زده کړو وزارت سره ثبت او راجستر ده د تجربه لرونکي علمي کادرونو او 3 دورې فارغانو په درلودلو سره د حقوق، سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او د اقتصاد په پوهنځیو کې ماسلان مني. اسانتیاوي او امتیازات، وړیا ترانسپورت، ځانګړی تخفیف، د لیلي امکانات، مناسب علمي دایمي تعمیر، پراخه پارکینګ، کتابتون او کمپیوټر لاب. پتا قصبه د موټرو پلورنځیو سړک، کابل، افغانستان. هیواد عصري او معیاري زده کړې. थॉमसन जिनका बल्ला शान था वो भी वो खोलते हुए 5 गेंदों में 8 रन पर पहुंच गए। सामने वाले छोर से गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, मोहम्मद नबी आए हैं। मोहम्मद नावी का बेहतरीन कार्य किया था बल्ले के साथ। आज 55 मुकाबले 56 विकेट लिए। कौन भी अगर आप देखें 7 से ऊपर। ओटक ने इस तरफ से पहला ओवर डाला था और अब मोहम्मद नावी आते हुए इस बार एंगल किया, बल्ले को खोला, पॉल स्टर्लिंग को बाउंड्री मिलेगी। रन नहीं रुक रहे हैं, अच्छी शुरुआत कहना होगा आयरलैंड द्वारा। अभी तक स्पिनर्स के लिए इतनी टर्न नजर नहीं आई, इतनी गेंद घूम नहीं रही है। यही कारण है कि बहुत बढ़िया वहां पे खेलते हुए पॉल स्टर्लिंग अंतिम क्षण पे गेंदबाजी गति का इस्तेमाल किया। मनोज, बहुत कुछ निर्भर करेगा आज अफगानिस्तान के स्पिनर्स कैसी गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया शॉट, 4 रन और मिलेंगे। तेज आउटफील्ड है, दौड़ने की जरूरत नहीं। पॉल स्टर्लिंग को एक और बाउंड्री मिलती हुई। केवल 16 गेंदों पे 38 पे पहुंचे पॉल स्टर्लिंग। जी हाँ, रनों का सिलसिला लगातार तेज गति से बनना जारी है। कोई भी ढीली गेंद छोड़ने को तैयार नहीं है। स्टर्लिंग जानते हैं कि बहुत बड़ा लक्ष्य उनको चेज करना है और जो पावर प्लेयर जितने ज्यादा रन उसमें बन जाए उतना ही लक्ष्य आसान हो जाएगा। 99 के 2 में भी 187 रन बनाने हैं। अच्छी क्रिकेट कही जाएगी। एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। दो कैच छोड़े हैं पॉल स्टर्लिंग के और वो काफी महंगे साबित होते हुए। स्टुअर्ट थॉमसन अब नया एक फ्रेश लेग गार्ड लेते हुए स्ट्राइक पे हैं। स्टुअर्ट थॉमसन बाएं हाथ के, तो बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन क्रीज पे आयरलैंड के लिए। पहले 6 ओवर पावर प्ले के बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, या अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार फिर से उठा के खेला है, खिलाड़ी डीप में तैनात, पर 6 रन मिलेंगे। प्रयास किया था, बिल्कुल सीमा रेखा के करीब आ गए थे, पर टाइमिंग हुआ धूंधा और 50 रन पूरे हुए आयरलैंड के। और मात्र 24 गेंदों में 50 रन, बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी।
एक अच्छी शुरुआत है। काहे का डर, काहे की फिकर, होश पकड़ जरा जोश पकड़, छे नाल जिंदगी चिपकरा जुगल, तू यार तू तैयार, एक्सरसाइज कर ले, छे नाल जिंदगी। Samsung Galaxy J series. For the first time, 5 megapixel front camera for flashlight Grand Galaxy J series. जरा जोश पकड़। ज़दरान एक बार फिर अपना तीसरा ओवर लेके आते हुए 2 ओवर 24 रन आज महंगे साबित हुए हैं, पर यह भी कहना होगा किस्मत इनके साथ नहीं रही। 2 मौके इनकी गेंदबाजी में छूटे हैं। ऑन साइड पे जाते हुए बढ़िया संपर्क, 4 रन और मिलेंगे और साथ में नो बॉल भी, तो ये सोने पे सुहागा। जी हाँ, 4 रन तो मिले ही, साथ में बोनस भी मिल गया और जिस गति से रन बन रहे हैं, चिंता का कारण हो सकता है अफगानिस्तान के लिए। देखिए पहली देर से बचा नहीं पाए गेंदबाज अपने को, फ्री का इशारा करते हुए। कह सकते हैं 4 ओवर में 59 रन हो गए अजय। कभी कभी कैच छोड़ना कितना महंगा पड़ जाता है, और आज वो कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। खासकर स्टार्लिंग जो कि बहुत ही तेज तर्रार पारी खेलते हुए 18 गेंदों में 43 रन में पहुंच गए हैं। और फ्री हिट का पूरा लाभ यहां पर मिलता हुआ, और अंपायर के दोनों हाथ हवा में इस बात का इशारा करते हुए एक और छक्का यहां पर आता हुआ, और इस छक्के की वजह से 49 पर पहुंच गए। स्टार्लिंग बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, मानो जो बड़ा स्कोर चेज करे उसका कोई दबाव ही नहीं है उनके ऊपर। या बिल्कुल जैसे आपने कहा, फ्री हिट का पूरा लाभ उठाया क्योंकि दबाव नहीं था, आराम से खेल सकते थे, मिड ऑन सर्कल के अंदर था, पर इतना बढ़िया टाइमिंग की गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 से पहुंचे पॉल स्टर्लिंग। अब केवल 19 गेंदों का सामना किया है। क्या बेहतरीन ये पारी रही है उनके द्वारा। स्टुअर्ट थॉमसन भी अच्छा साथ देते हुए, वो फिलहाल 14 पे। स्ट्राइक गेंदबाज हैं शाहपुर ज़दरान, और आज महंगे साबित होते हुए रन रेट देखिए आयरलैंड का 15 से ऊपर, 15 से ऊपर रन रेट, और रिक्वायर्ड 11 से नीचे। और फिर से उठा के खेला है खिलाड़ी डीप में, और यहां पे विकेट मिलेगी। ये बड़ी विकेट, और शतक पूरा नहीं कर पाए पॉल स्टर्लिंग। प्रयास किया था कि स्क्वेयर लेग फील्डर के ऊपर से खेले, अंत में ज़दरान को विकेट मिलती हुई। तीसरी बार गलती नहीं करी, 2 बार कैच छोड़े पॉल स्टर्लिंग के, पर तीसरी बार बिल्कुल सही एंटिसिपेशन, और यहां पे एक अच्छा कैच। ये थी विकेट, पहले शफल करके लगभग ऑस्ट्रेम के बाहर आ गए थे। जी हाँ, और अजय यदि देखा जाए जो पिछली 2 कैच थी उसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन इस बार फील्डर काफी चौकन्ने, मात्र 20 गेंदों में 49 रन बनाकर अच्छा स्टार्ट यहां पर दिया है। नए बल्लेबाज आयरन कैप फील्ड आए हैं। नींव तो अच्छी रखी है अजय, यहां पर अब देख रहे हैं इमारत कैसी बनती है। देखिए T20 में कहते हैं ना मनोज, मोमेंटम बहुत जरूरी है, और जो मोमेंटम यहां पे दिया पॉल स्टर्लिंग ने उसको आगे बरकरार रखना होगा। अफगानिस्तान टीम के काफी समर्थक यहां पे मौजूद हैं और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली अभी तक इस श्रृंखला में अफगानिस्तान की टीम ने, और बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रुचि भरा ये मुकाबला, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट मिला है आयरलैंड को एक बड़ा स्कोर का पीछा करते हुए।
इस बार सीधे बल्ले से और बढ़िया टाइमिंग, 6 रन मिलते हुए बॉल स्टर्लिंग वापस चले गए हैं। बस स्टुअर्ट थॉमसन ने ऐसा लग रहा है उनकी जगह ले ली अब, और सोच वही है, आक्रामक शैली में खेलना और पहले जो 6 ओवर है, पावरप्ले के ओवर है, उसका लाभ उठाना। और एफर्टलेस, बिल्कुल सीधे बल्ले से, जैसे मानो गेंद को केवल पुश किया हो और गेंद सीमा रेखा के बाहर गिरी। कट करने का प्रयास, चूके यहां पे डॉट डिलीवरी, गति मिशन किया था शाहपुर जदरान ने और अच्छी सोच उनके द्वारा। ये थी आखिरी गेंद, ऑफ कटर, और बहुत करीबी मामला था, बहुत करीबी मामला पर अच्छी कलेक्शन भी मोहम्मद शहजाद द्वारा। इस बार फिर से उठा के खेला है और लीजिए एक और बाउंड्री। तेज आउटफील्ड है, इनफील्ड को क्लियर किया स्टुअर्ट थॉमसन ने। जहां चाह रहे हैं वहां पे स्ट्रोक खेल रहे हैं और आज ऑन द राइज मनोज काफी शॉट्स देखने को मिले हैं। एक बार फिर से गति में परिवर्तन करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज को भेद नहीं पाए। पिछला गेंद जो था वो बिल्कुल वाइड के नजदीक था, करीबी मामला था, शायद यही वजह थी बच गए, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने स्ट्रोक के लिए जगह बना ली थी। जैसे रन आ रहे हैं ऐसा लग रहा है राशिद खान जो लेग स्पिनर है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे, उनको जल्दी लाना होगा। स्टुअर्ट थॉमसन फिलहाल 24 पे नाबाद, केवल 10 गेंदों में। पटकी हुई गेंद, इस बार फिर से हवा में, पर प्रयास बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रयास। शायद ऑन फील्ड अंपायर इसको रेफर करेंगे, चेक करेंगे, और चेक ये करेंगे मनोज जब गेंद को अंदर धकेला। یو د لوخو منځلو مایع هم راکه هر یو چې مې کور ته وړې هیڅ د لوخو غوړوالی نه پاکوي. دا هم د وهاب د لوښو مینځلو مایع هم غوړوالی پاکوي او هم لوښي روښانوي. کاکا بابا ما نو ویلي چې د وهاب ټول توکي د اعتماد وړ دي. هو لورې दूसरे एंगल से भी देखना चाहते हो। तीसरे अंपायर के लिए आज काफी बिजी रखा है। हवा में जरूर था, लेकिन जी हाँ, मुझे तो लगता है वो सीमा रेखा के ऊपर से आए हैं, जो यहां पर 4 रन मिलने चाहिए। पांच ओवर का खेल यहां पर हो चुका है। तेजी से यहां पर पूरा करते हुए और आगे का डिफरेंट देने के लिए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में रामन मनोट और अंजुम चोपड़ा। शुक्रिया मनोज। Afghanistan getting a taste of their own medicine that they offered the Irish bowlers. 78 for 1 at the end of 5. 156 more required to win. 88 deliveries left. The momentum that's happening seems like a good game. This is the last over of the power play. Ireland trying to make the most of what they can for the first 6 overs when the fielding restrictions are in place. 72 the best for William Porterfield. With Thompson on strike.
And that's going to be maximum down the ground over the side screen. Thompson really getting a hold of this. It's raced away to 32 of just 14 deliveries. Ireland are making a match of this. And it's good to see Thompson getting into the party. He was there, one of the attacking batters in the first game. Missed out in the second. Another one. And it's going to be 6 more. Sprayed it on the pads, and Thompson needed no further invitation. Nabi is proving to be expensive in this over. He's gone for 13 now. Angling into the left-hander. It was easy pickings for Thompson. Times it to perfection. 6 more. Down the ground again. Will pick up at least one. Six gone, 91 for 1. Now the match very neatly set up. Look at the batting card for Ireland. Again, it was Paul Sterling who got them off to a flyer. 49 of just 20 balls. Catch by Nabi to claim Zadran finally. Thompson's taken the cudgels over ever since. 39 of 16 deliveries. لیسه خصوصی احمد غیره که ثبت راجستر شده وزارت معارف می باشد برای سال جدید تعلیمی شاگرد می‌پذیرد. مکتب مذکور با داشتن استادان مجرب و مسلکی، صنوف معیاری، کتابخانه، کامپیوتر لب مجهز، لابراتورهای استاندارد، ترانسپورت مجهز برای شاگردان و استادان و با استفاده از روش‌های خاص متدیکی علمی و بین‌المللی، نصاب تعلیمی معارف و آکسفورد و با داشتن ویژگی‌های چون فضای مناسب درسی و محیط آرام، دروس قرآنی و دینی، کورس‌های زبان انگلیسی، کامپیوتر و خطاطی بر علاوه مضامین مکتب به صورت رایگان تدریس می‌گردد. پذیرش شاگردان ذکور و اناث از دوره آمادگی صنف اول الی صنف 12 ثبت نام جریان دارد. داخل رایگان باش. آدرس شرق لیسه عالی غلام محمد خان، ساحه الف خوشحال خان. لیسه خصوصی احمد غیرت آینده اطفال شما را تضمین می‌کند. Carted away for another boundary. So the field is spread now. Remember, the power play has come to an end. The first 6 overs are gone. So now the power play has ended. Oh, he's played on. Thompson would be disappointed. He's just edged the ball back onto the stumps. And his knock of 43 comes to an end. Ireland lose wicket number 2. They're 95 for 2 now. And it's been happening for Irish team right through the earlier 2 games that they've played against Afghanistan. Any sort of momentum coming in, they are pegged back by a wicket in the middle. Thompson, the main destructor, wanting to muscle it down the ground again, playing the shot early, getting a bottom edge onto the bat and onto the stumps. Gone for 43, 95 for 2. Just when they were getting momentum. جرایم مالیاتی هرچه کمتر بهتر. شرکت خدمات مالی صاحبی در نظر دارد که به خاطر سهولت‌های هرچه بهتر مالیاتی، اشخاص حقیقی و حکمی در پیوند به قانون مالیات بر عایدات برنامه‌های آموزشی ضعیف را دایر نماید. 1. معلومات عمومی در مورد قوانین مالیات بر عایدات. 2. محاسبه مالیه. 3. خانه‌پوری اظهارنامه مالیاتی. 4. ترتیب و تنظیم بیلانس ختم سال. 5. حقوق و مکلفیت‌های مالیه دهنده. 6. حالات پرداخت مالیات اضافی. 7. حل مشکلات مالیاتی. بنابراین از تمام شایقین و متقاضیان محترم خواهشمندیم که برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید. آدرس: شیرپور، کوچه نمبر اول، خانه نمبر اول، کوچه مجید مال. شماره تماس 0728 99 10 10. Experienced Kevin O'Brien, been around almost 7 to 8 years or more for the Irish team. 52 matches, one-day cricket under his belt as well. He'll be looking forward to contributing in this match. With the bat specifically.
what's happened now is the field is spread. So you've got boundary riders and the option to cut off the fours. And sixes which were flowing so easily in the first 6 overs for Ireland. Because there are open spaces, the singles can be easily available for these two batters, and that will help them. It will help them settle in. It will help them ease that pressure off that of losing Thompson, and give them enough time to maybe, by the time Rashid Khan comes in and is introduced, the main destructor in the previous T20 for Afghanistan, by the time he comes in, they are well set and really ready to tackle the wrong ones that he was throwing at them in the previous match. Top delivery there to end the over. So they've got 7 from it. And that's the man in question, Rashid Khan. A 5-er in the previous match. But it's 98 for 2 after 7 now. مؤسسه تحصیلات عالی اسپینغر مؤسسه تحصیلات عالی اسپینغر شعبه کابل برای سمسترهای جدید بهاری 1396 خویش در پانزایی‌های طب معالجوی، استوماتولوژی، تکنولوژی طبی و انجینری فارغان صنوف 12 و فارغان صنوف 14 انستیتوت‌های علوم صحی و تکنیکی ذکور و اناث را در تایم‌های قبل از ظهر و بعد از ظهر با داشتن استادان مجرب، شفاخانه تدریسی و امکانات درسی مجهز محصل می‌پذیرد. ثبت نام همه روزه جریان دارد. امتحان کنکور به تاریخ 10 حمل 1396 در مقر مؤسسه تحصیلات عالی اسپینغر شعبه کابل عقد می‌گردد. آدرس: کارته نو سرک 960 متره، رحمان مینا، کابل. اسپینغر نماد تحصیلات عالی استاندارد و معیاری. Just feeling that Stanza is just holding him back another couple of overs. Once Karim Janat and an over here or there from Hotak, at least to press in before those 4 overs can be utilized. It's a game of patience now. They've got enough on the board to not get rattled, Afghanistan, and ensure that Irish team is always under the pressure to make sure they can't take their foot off the accelerator at any point of time. This is the big partnership that needs to really make sure if Ireland has to finish on the other side of the fence today. Another easy single for Kevin O'Brien now. Absolutely right, and Asghar Stanigzai knows that. The Ireland middle order, the lower middle order, has proved to be brittle in this series. You saw that in the second T20 as well. Once Porterfield and O'Brien weren't there at the crease, I think Gary Wilson, nobody else really having that mettle to put up a strong fight. Holding the ball back a tad, not allowing it, not the ideal drivable length. That's why Porterfield had to check his shot. So 100 on the board with that single for Ireland, 100 for 2 in the 8th over. Remember, they've just taken 22 balls to get the second 50 of the innings. They took 24 to get the first 50 runs, so they've been very quick as compared to Afghanistan to get these runs so far. In the end, taken as well. That's a big wicket. Mohammad Nabi makes no mistake in the outfield. And Karim Janat has got his man. A big blow. Kevin O'Brien, much was expected from him, at least in this game. Hasn't really fired in the earlier 2 games as well, and nor in this. مؤسسه تحصیلات عالی هواد که ثبت و راجستر شده وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد، با کادر مجرب علمی و داشتن سابقه استعداد فراغت موفقانه
در رشته‌های اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، فناوری اطلاعات یا آیتی با امتیازات ترانسپورت رایگان، امکانات لیلیه و تخفیف ویژه به مناسبت افتتاح مکان جدید و دائمی تحصیلی و پارکینگ وسیع برای سال 1396 محصل می‌پذیرد. آدرس: کابل قصبه سرک موترفروشی، هواد، تحصیلات معیاری اصلی. When the ball's dipping on you, and once again it's Karim Janat not bowling that ideal drivable length. Always playing on the rise here was Kevin O'Brien. Good catch. Yeah, maybe he saw a big gap at long of reach and one or two players had just taken advantage of it. Maybe pick up a boundary. One bounce, but ball just sailing over, going to the mid-on region. Once again, it's an Atish drive by the captain to fetch him a single, and that is going to end a wicket taking over from Karim Janat. 8 overs gone, it's 101 for 3. Paul Sterling again getting up for 49, but after an explosive start with Thompson, who went for 43. Porterfield is battling out there, and he's just lost the big hitter in Kevin O'Brien, who was picked up by Karim Janat in his first over. Just gave away 3 runs. But look at Zadran being taken for runs. 15. A couple of overs. They know that the game is within grasping distance. You need to keep ensuring they don't lose wickets. A single worked away there. Porterfield, to the time he's there, Ireland would still feel they're in the hunt. The new man in, of course, is their wicket-keeper batsman, Gary Wilson. Best of 65 not out in his T20 international career. Strike rate just a shade over 100. Given the T20 format, he'd like it to be a little higher, around the 130s. Gets off the mark instantly. I remember Ireland have scored 225 in the past against Afghanistan in a T20 international. That's their highest score in T20s. The 225 that they got. And that was back in 2013. So they would look to score briskly against this Afghan attack. But if they were to get 234, it will be their highest score in T20 internationals, and of course the highest versus Afghanistan as well. The fielding has become sharper for Afghanistan. The boundary riders are very aware that they don't want to give up that second run, which the Irish batters are really looking for. Tries the reverse sweep there. Thought he saw the gap because there were 2 fielders inside the 30-yard circle. Thought he could bifurcate them. In the end, the captain getting the final hold on things. Very fortunate for them. They didn't have a collision because both of them were rushing towards the ball. Stanik Zaid was on his right. Feeling anyway, that's the end. Very lucky that if not out it is. Not out's a signal. There'll be a relief all around the ground. The green shirts. That was very poor cricket. Definitely not any of the youngsters to look forward to. Oh, that's pierced the gap.
Hands in the air for Kotak. He's unhappy. So boundary to end the over. 11 gone. It's 129 for 4. A wicket taking over from Hamza Hotak coming to an end. Looking for 2 here. Hint of hesitation. Guy was the joint Jibullah Taraka at 90 did score. Did do much. Let's be in the part. Someone or the other is always put his hand up whenever the team is required a performance. Oh, good delivery by Janat again. Saw the batsman charging short the length. This is good bowling from Karim Janat in the line of the stumps. He's giving himself an opportunity if the batter had to miss to hit the stumps. Require boundaries here to ease that pressure which is growing on this Irish team. Climbing run rate as well. 102 required now of just 51 deliveries, out of which 24 will be bowled by Rashid Khan. So the asking rate is exactly 12 runs per over. Right, Rashid Khan generally has been used by Asghar Stanikzai in the latter half of the innings. He always comes on the ball post the 10th over. But in the second half of the innings, look for a couple and get it as well, Gary Wilson. But this is not going to be easy. Half the number of overs to come will be bowled by Rashid Khan. And that's been the story for Ireland in the first 2 games as well. They've looked menacing, they've looked dominating,
But after losing the first 2 wickets, it's been a healthy climb up. Struck well. More of these shots are required if Ireland are to make a match of it. Gary Wilson really getting hold of it. It's just a nice length that he could get under as he played that shot. A nice sound of the bat as well. It's just in the area. Oh, good enough to swing his arms through the line. Oh, was that a chance of a cotton ball? Again, wasn't up to the pitch of the ball. Just checked his drive at the last minute, did Wilson. Gets a single and that ends the over as well. 12 gone, it's 141 for 4. And this is what I was saying. 8 overs to go, 4 of which will be bowled by Rashid Khan. The ace weapon that that Afghanistan have against Ireland in this match. That smattering of wickets that went down for Ireland in the run chase, that's caused them problems. And that's the trophy, the one on the extreme right that they're playing for, which of course the winning trophy for the series is already in the grasp of Afghanistan because they've taken an unassailable 2-0 lead in this 3-match series, the T20 series. And Rashid Khan into the attack now. He had 5 wickets in the previous game. And those were his best bowling figures as well. Applaud for the fielder coming in from the boundary. He was quick, the extra cover fielder. Getting the second run, coming in and making sure the throw is right on top of the stumps. McBrien's batting on 4, run a ball for him. Past the infielder, it's just going to be 2 in the end. Tarakai doing the mopping up in the deep. .22 runs has been the partnership of the 13 deliveries between these two. Where to get that boundary from? They need a 4 or a 6. Down the ground again, should pick up at least a couple if not more, but placed it to perfection. Welcome boundary for Wilson now. As required, the pressure was building up. 8 runs off the over now. Again, Wilson striking that hard. Good use of the bottom hand. He's hit it in an area. He's bisected both long on and long off. Played the googly with the turn. So 150 on the score sheet at the end of the 13th over. He's going to retain strike as well with Gary Wilson. That was the boundary that he'd struck a couple of deliveries ago. Wilson has got to continue in that aggressive mode because Ireland, remember, are chasing 234 to try and win this T20 international. It'll be their highest score in T20s if they were to get it.
Oh, this could be risky. Probably not picking the right end to throw at. Mohammad Nabi, had he taken a shy at the non-striker's end, might have found McBride in trouble. But excellent running. Sensing the urgency, these two know very well that it wasn't hit that powerfully, so by the time Nabi came off, was hit in the air, so that gave enough time for McBride to turn back and cover his end. Good one-handed pickup, albeit from Mohammad Nabi. He'll again have a lot of work to do this time. He's charged the ball very early, kept the batsman down to just a single. Long on to long on, I say that, for Mohammad Nabi. He's a captain's delight to fielding at prominent positions in the field. Tough ask though for Ireland here, 81 of just 40 deliveries, acquiring over 12 runs per over. Oh, suddenly there were five people inside the ring. Now there are 4. It's a clean hit and it's maximum. McBride rising to the occasion. Gets into double digits. Manufactured that shot by going across his stumps. Read the length well. Just a little shimmy on the offside. Get himself enough to hit it over the long leg region. Out comes 6 runs. Just eases a little bit of pressure off McBride. The third 50 of the innings to 32. By far the slowest for Ireland. Trying too much and he's been given a before. I thought he got caught in 2 minds. Benson then thought he'd play the reverse scoop. Trapped in front of the stump. The length delivery. He's got to go. It's 59 for 5. No, he's missed an opportunity here. Back for 13. 5 down now for 159. That's been the problem for Ireland as Tucker walks in. هیواد د لوړو زده کړو مؤسسه چې د لوړو زده کړو وزارت سره ثبت او راجستر کې علمي کادرونو او 3 دورې فارغانو په درلودلو سره د حقوق، سیاسي علومو، کمپیوټر ساينس او د اقتصاد په پوهنځیو کې محصلان لري. اسانتیاوې او امتیازات، وړیا ترانسپورت، ځانګړی تخفیف، د لیږي امکانات، مناسب دایمي خبر، کتابتون او کمپیوټر لاب. پته قصبات د موټرو پلورنځیو سړک کابل افغانستان. هیواد اصلي او معیاري زده کړې. That went through bat and pad and luckily didn't disturb the furniture. That last week, the wind out of the sails for Ireland. 75 required of 37 balls, the best of the batting back in the hut. Another dot delivery and they're worth their weight in gold. 14 overs gone, 159 for 5 and Karim Janath has bowled out his spell as well. 14 overs gone and 4 overs of Janath also done.
quota of 4 overs. Hota has bowled out his 4 overs, 2 for 39. Kareem Janat has bowled out his quota of 4. A lot of dignitaries looking on from the VIP box, the balcony. Rashid Khan. That should be a wicket here. Oh! Two Afghans with each other. Oh dear, the captain, Asghar Stai and Shapur Zadran almost each other's way. Chance is begging. The interesting part was when the captain's involved. It was the leading edge, wanting to play it on the onside. It was always 10 exercise. Got distracted by Sadran coming in. Everyone went. One towards Zadran, other towards the again went in the middle. Fortunately for Zadran and Stanizai earlier, they didn't collide into each other. Would have been another shocker and an injury to either of them. Oh, yes. The cow corner, that of course, Deepak Agarwal, Noida and Great along with Mr. I'm watching cricket. I think it's been a wonderful facility here. Oh, this could be a run out. They're appealing the Afghan team. Quick pick up and throw from Najibullah Tarakai. But I dare say the batsman's made his ground. That seems like it. Down to the long leg region. They were always looking for two, especially after this misfield. Yeah, the bat sliding in and doing really well. That's good work. Really good work. If the bat had been the other way up, could have been caught in the air, but he's way in. A large part of the bat can be seen grounded well enough behind the crease. Wilson is safe. If you're not getting the boundaries, then you've got to run hard. That's what Gary Wilson's doing. But Najibullah Tarakai, one has to give him credit, quickly changed direction after the ball was deflected the other way. Good pick up and release. Very close to the stumps. An economical over so far from Rashid Khan, just 4 runs from it. He's not picked up a wicket, at least he's kept things very quiet in his spell. That's well done. Dot delivery to end over number 15. It's 163 for 5 Ireland. And the task is just getting tougher and tougher for them. He's looking for a run there. There's Wilson, which was non-existent. 2 overs from Rashid Khan, yielding just 13 runs. Now, 71 required and 30 balls.
विल्सन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सेट बैट्समैन है, 36 से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 22 गेंदों का सामना किया है, 71 रन चाहिए 30 गेंदों में। कठिन है पर नामुमकिन नहीं। स्वागत है मनोज, क्या लग रहा है? धन्यवाद अजय। क्रिकेट में असंभव कुछ भी नहीं है। जिस तरह से शुरुआत की थी, मुकाबला जोरदार रहा है और अभी भी कहना होगा आयरलैंड के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी है। एक बार फिर से यहाँ पर बड़ी हिट आती हुई और गेंद एक बार फिर से दर्शक दीर्घा के अंदर जाती हुई और ये अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, तो इस बात का संकेत की एक बार फिर ये 6 रन के लिए बाहर गई है। यह विल्सन की आज तारीफ करनी होगी, जिस अंदाज से ने बल्लेबाजी करी है। जैसे पहले भी कह रहा था मनोज, बहुत अहम रहता है कि एक सेट बैट्समैन अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करे। तेज गति गेंद मोहम्मद नाबी द्वारा ये करना होगा, क्योंकि ये ऑन साइड पे ज्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं विल्सन। तो जो लाइन है, अगर उसमें तब्दीली आप करते हैं, ऑस्ट्रेम के बाहर करते हैं, तो वहां से फिर शॉट मारना इतना आसान नहीं। फुल लेंथ की गेंद फिर से उठा के खेला है, 4 रन और मिलेंगे विल्सन को। ये बढ़िया शॉट, अच्छी पोजीशन में आ गए थे, सीधे बल्ले से खेलते हुए। दबाव आता हुआ मोहम्मद नाबी के ऊपर। अब जब पिछला गेंद ऑस्ट्रेम के बाहर तेज गति से किया था, इस बार भी लगभग उसी अंदाज में गेंद किया था, लेकिन विल्सन ने इस बार गेंद को पहले ही पढ़ लिया था और अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर है। देखिए सीधे बल्ले से खेला, टीम बॉलर के ऊपर से, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। स्वीपर का फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन मिलेगा। बारह रन अब इस ओवर में आ चुके हैं, 175 अब आयरलैंड का स्कोर। अब अभी भी अब 5 खिलाड़ी शेष, और इस जोड़ी के ऊपर मनोज बहुत कुछ निर्भर करेगा। सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, अब अंतिम गेंद पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए 16 ओवर की समाप्ति, 176 पे 5। आयरलैंड का स्कोर कार्ड, स्टर्लिंग ने 49 रन बनाए, 20 गेंदों में बहुत ही तेज तर्रार पारी खेली और लगभग उसी अंदाज की पारी थॉमसन ने खेली थी। 18 गेंदों में 43 रन बनाए थे। उसके बाद अब विल्सन ने वो जिम्मेवारी संभाली है, 26 गेंदों में 47 रन बनाए हैं। फैजान जी को विकेट और भी मिल सकते थे, थोड़े महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 47 रन तक एक विकेट लिया। राशिद खान के अभी भी 2 ओवर शेष हैं, लगता है वो बहुत अहम रहेंगे। इस बार आगे आए, हवा में खेला है, ये बढ़िया संपर्क, 6 रन मिलेंगे इस बार विल्सन को नहीं और उनके साथी टकर को। अच्छा फुटवर्क, कदमों का इस्तेमाल किया। पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे राशिद खान ने। अपना तीसरा ओवर अभी डालते हुए अजय, इस मुकाबले में चौकों और छक्कों की भरमार रही है। अभी भी देखिए 13 चौके और 12 छक्के आयरलैंड की तरफ से लग चुके हैं। फिर से उठा के खेला है, लॉन्ग ऑफ फील्डर कुछ ही गज उनके आगे गिरती हुई। राशिद खान को एक और कि अंतिम ओवर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि कप्तान को पूरा भरोसा है, जो क्षमता उनके जो पास है। कैरी विल्सन 47 पे, काफी खाली जगह है ऑन साइड पे, सही तरह से टाइम भी नहीं कर पाए थे विल्सन, पर अपने अर्धशतक के काफी करीब।
50 रन। अच्छी वापसी यहाँ पर राशिद के द्वारा। इसके बाद अभी भी एक ओवर शेष है राशिद खान का। इस ओवर के बाद कट करने का प्रयास, भाग्यशाली रहे वहां पे। बहुत अच्छी सोच, क्रीज के कोने से जाते हुए राशिद खान। ओहो हो, पहले बैट पे लगी गेंद, अधिक टर्न कर रही थी। और ये चीज लगातार पिछले मैच में भी बहुत अच्छी कर रहे थे राशिद खान, जैसे अपने गेंदबाजी मिश्रण कर रहे थे, लेग स्पिन, फ्लिपर, गूगली। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, ज्यादा फिर से अपने 3 ओवरों पहले डाल चुके हैं, दिए एक सफलता उन्होंने की थी। हालांकि एक ओवर ऐसा जरूर आया था जिसमें 2 लगातार उनकी गेंदों पर कैच छोड़े गए थे। 3 ओवर शेष यहाँ से और 48 रन चाहिए इंग्लैंड को मुकाबला जीतने के लिए। विल्सन अर्शदा के काफी करीब, शाहफूज अदरान वापस आते हुए महंगे साबित हुए। इकॉनमी देखिए लगभग 16 की, एक सफलता मिली है, खर्चे ओवर में। बढ़िया ड्राइव, खिलाड़ी टीम में तैनात, अच्छा प्रयास, अच्छा फील्डिंग एफर्ट और 2 रन और मिलेंगे विल्सन को। इसका उनका अर्शदा की बहुत बेहतरीन पारी, तारीफ करी अर्शदा का आयरलैंड के लिए इस इनिंग्स में। और अजय मात्र 29 गेंदों में अर्धशतक बनाया है, 4 चौके और 2 छक्के। अब यहां से देख रहे हैं क्या वो अपनी टीम को जीत की ओर ले जा पाते हैं। जिन्होंने की 16 की औसत रन दी अपने पहले ओवर्स में, और अभी आयरलैंड को जरूरत है 16 का ही लगभग औसत है। फील्ड में बदलाव, अब जो खिलाड़ी थर्ड मैन के वो आते हुए और जो फाइन लेग के खिलाड़ी वो पीछे जाते हुए, तो फील्ड में बदलाव किया यहाँ पे स्टैनिक्साई ने। थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल में, तो ज्यादा अब ऑफ साइड में दे नहीं सकते। और शायद यही कारण है लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखने का प्रयास, वाइड का इशारा एम्पायर को, कोई भी अब समस्या नहीं हुई वहां पे। हालांकि एक्स्ट्रास मनोज ज्यादा नहीं है अभी तक इस इनिंग्स में, केवल 3 ही एक्स्ट्रास। अजय विल्सन जो अधिकतर ऑल साइड पे खेलते हैं, और शायद यही वजह है कि स्क्वायर लेग और फाइन लेग बिल्कुल सीमा रेखा के पर लगाए हैं। बल्लेबाज को कहा गया कि गेंद को बाउंस कराए, और इस इनिंग्स में पहला वाइड। इस बार ऑल पे फिर से नीचे वाले हाथ का काफी, बॉटम हैंड का केवल 1 ही रन मिलेगा। डीप मिड विकेट से दौड़ के शाहपुर जदरान के पास आए और अब फिलहाल विकेट में जाते हुए कुछ बताने आए किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी है।
एक बार फिर से यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग का नमूना दिखाते हुए निश्चित रूप से 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए, लेकिन पैर का इशारा नो बॉल था। चौथे 50 रन की बात करें 31 गेंदों में आते हुए, पहले 50 रन में बहुत जल्दी आए थे और ये गेंद अक्रॉस लाइन खेला था। टाइमिंग इतना बढ़िया नहीं और बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में पहला रन थे, इससे लिया उसे रन के लिए। अब में डाइव लगाई और सुरक्षित क्रीज में इस बार उठा के खेला है, में आता हुआ गेंद के नीचे, यहां में विकेट मिलनी चाहिए और जी हां, राशिद खान को सफलता मिलती हुई पहली विकेट इस मुकाबले में, और ये बड़ी विकेट हो सकती है। जेरी विल्सन जो हो चुके थे, अर्धशतक लगा चुके थे, टॉप स्कोरर है इस इनिंग्स में, वापस जाते हुए निराश अपने आप से और अहम समय आयरलैंड के लिए एक विकेट गिरता हुआ और समस्या थी क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया था, हल्की सी टर्न राशिद खान के लिए, पर वो काफी थी। जी और बल्ले के कहना होगा निश्चित में गेंद लगी थी और काफी देर हवा में रही, आसान सा कैच वहां और निश्चित रूप से अफगानिस्तान की सांस गहरी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। बल्लेबाज है गैरी थॉमसन आए हैं स्ट्राइक टक्कर के पास, आता है ये बल्ला घुमाया ऑफ साइड पे, अच्छा एफर्ट डीप में, ये तो समय नहीं है थॉमसन के पास और रिक थॉमसन जो अभी भी आए हैं, टक्कर स्ट्राइक पे है। इस बार यहां पे विकेट मिलेगी, राशिद खान कोई गलती नहीं करते, यह आखिरी उनका ओवर है और फिलहाल 2 विकेट ले चुके हैं। दोनों सेट खिलाड़ी जो समय में थोड़ा समय व्यतीत किया था क्रीज में, वापस अब जाते हुए टक्कर आउट हुए 16 रन बना के। पिछले मुकाबले में 5 विकेट राशिद खान के लिए और फिलहाल इस मुकाबले 2 सफलताएं उनको मिलती हुई और फिर से खराब शॉट सिलेक्शन, ऑन साइड पे खेलने का प्रयास स्पिन के विरुद्ध, वॉकर टक्कर वापस जाते हुए 16 रन बना के 14 गेंदों का सामना किया। ने पिछले मुकाबले में भी 2 ओवर 1 मेडन 3 रन देकर 5 स्पेल मैंने कहा, और आज एक बार फिर से जब टीम को उनकी जरूरत थी, बेहतरीन गेंदबाजी उनकी है, कीपर को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए, विकेट गंवाया। इस ओवर में दूसरी सफलता उन्होंने अर्जित की।